Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis, and today is actually 9th January and we are here with the Hindu analysis of 9th January at 11 a.m. in the morning. I will be discussing today's the Hindu analysis in both English as well as in Hindi language. तो मैं हिंदी में भी बताऊंगा और अंग्रेजी में बताऊंगा. Let's start with today's first page of the Hindu newspaper. And if you are aware, today is 9th January, Monday. And some of the important articles on the first page are this one. We fell short, says Tata Sons chairman on Air India flight route. I'll be discussing about it कि क्या हुआ था, क्यों एयर इंडिया न्यूज में थी, किस कारण उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन ने ऐसा कहा. द नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिव्यूज सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन. पीएमओ मींस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो रिव्यू करेगा सिचुएशन जोशीमठ टाउन में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आई होप यू आर अवेयर that recently it has developed cracks and all in the city of Joshimath in Uttarakhand. So we will be discussing about it. Then here is an article, fake Indian COVID medicine flooding China's black market. इसको हम लोग जानेंगे. ये वाली आर्टिकल फेक कोट में लिखा हुआ है. So we'll be discussing about it, what exactly it is. So first of all, the most important news is this one related to Joshimath. तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल गाइस? यस. ओके, यस. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिव्यूज सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन. रेसिडेंट्स ब्लेम एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट फॉर द डैमेज टू द सैक्रेड टाउन इन उत्तराखंड. डिमांड प्रोएक्टिव रीसेटलमेंट स्टेप्स बाय गवर्नमेंट. एनडीएमए मेंबर्स टू विजिट टुडे. तो वहां के लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पर जो एक एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है उसके कारण क्रैक्स आया है हर जगह हाउसेस में. आई विल शो यू. सो आई होप यू मस्ट हैव सीन दिस इन द इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल. देखो ये क्रैक घर के अंदर ना पूरा क्रैक आ गया है. यहाँ देखो, ये वाला देखो, पूरा क्रैक आ गया. आर यू सीइंग इट? सो दीज आर द क्रैक्स. ये पूरा देख रहे हो? सो एनी टाइम द हाउस कैन एक्चुअली ऑटोमेटिकली गेट डिमोलिश्ड. तो कभी भी वो अपने आप गिर सकता है, टूट सकता है. यू कैन सी दिस इज द टेम्पल विच एक्चुअली सफर्ड दिस बिकॉज ऑफ दीज एक्चुअली दीज क्रैक्स एंड ऑल. तो उसका रीजन क्या है कि इतना क्रैक्स आ रहा है जमीन के अंदर? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. ओके, तो उसका कारण क्या है इसको हम लोग जानेंगे. इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो यहाँ, पीपल अफेक्टेड बाय ग्रेजुअल सिंकिंग ऑफ जोशीमठ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड गैदर इन तहसील ऑफिस. देखो ये गाड़ी भी लगी हुई है ऑफिसर की. सो दे आर एक्चुअली दे हैव गैदर्ड हियर टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि यू शुड डू समथिंग. सो सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या कुछ कीजिए. देखो यहाँ पे देखो घर में पूरा क्रैक्स आ गया है एंड ऑल. चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड के जोशीमठ. नाउ सो देखो, अगर आप देखोगे यहाँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है. द सब हेडलाइन सेज रेसिडेंट्स ब्लेम एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट. तो बता ये रहे कि वहां पर एक विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट है जिसके कारण so the reason behind the cracks and all the tectonic shift and all is because of this power project, hydropower project, for the damage to the sacred town. Now the word sacred means पवित्र, जिसको हम लोग कहते हैं holy, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पवित्र. So this is a very you can say religious place. I hope you are aware in Uttarakhand there are a lot of Hindu religious places like Kedarnath, Joshimath and all, है ना, हरिद्वार एंड ऑल. तो बहुत सारे वहां पर सैक्रेड टाउन्स हैं उत्तराखंड में. उसमें से एक सैक्रेड टाउन जोशीमठ भी है. डिमांड प्रोएक्टिव रीसेटलमेंट स्टेप्स बाय गवर्नमेंट. वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको दूसरी शहर में दूसरी जगह रीसेटल करे. सो दे आर डिमांडिंग दैट इन अ फास्ट मैनर दे शुड बी रीसेटल्ड टू अ बेटर प्लेस. दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली डिमांडिंग. एनडीएमए मेंबर्स टू विजिट टुडे. एनडीएमए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ठीक है. एनडीएमए के मेंबर्स जो है फ्रॉम सेंटर मींस फ्रॉम दिल्ली, दे विल बी विजिटिंग दैट प्लेस. सो वो दिल्ली से आएंगे वहां. एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. आई थिंक इट वाज पास्ड इन 2000 आई गेस 5 के आसपास, है ना. So this disaster management act is very important.
and under this National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authority were set up and all. तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो आप देख सकते हो दीज आर द क्रैक्सेस, ये भी आप देख सकते हो दिस इज द टेंपल व्हिच एक्चुअली गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि वो है कहां पर लोकेशन. तो इसमें लिखा हुआ है ना कि रेसिडेंट्स ब्लेम एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट फॉर दिस. तो वहां के आम जनता ये कह रही है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसके कारण हुआ है. देखो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, आपको पता होगा दिस रीजन इज एक्चुअली हिमालयन रीजन एंड ऑल, राइट. यहाँ पे है ना, ये तो आपको पता होगा ना, दीज आर हिमालयाज. सो इवन इन उत्तराखंड द हिमालयन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस. And I hope you must have studied in your school days that it is a young fold mountain. Yes, ये आपने पढ़ा है बचपन में, ठीक है. And still the actually the tectonic plates are very proactive there. तो यहाँ पर अभी भी आपने देखा होगा, you must be aware of it, कि you will find a lot of earthquakes in this region. कभी आपने सुना है कि यहाँ पे earthquake बहुत आता है. So these are actually earthquake prone region. For example, in Nepal you must have witnessed earthquake many times. आपने देखा है कि नहीं कि नेपाल में बहुत earthquake आता है. Yes, है ना, जैसे 2015 में आया था, recently आया था and all. Similarly, you must have seen in Uttarakhand a lot of earthquakes and avalanches. Avalanches बहुत आता है. क्यों? इसलिए कि वहां पर टेक्टोनिक प्लेट अभी भी मूव कर रही है, एकदम ये नहीं हुआ है, ठीक है. अब क्या है, देखो दिस इज उत्तराखंड, ये वाला जो देख रहे हो, दिस वन is Uttarakhand state. This is Uttarakhand state. Let me zoom it, तो आप देख सकते हो ये. अब देखो यहाँ पर उत्तराखंड की कैपिटल है, this is the capital of उत्तराखंड, देहरादून, right? Now here you will find जोशीमठ district. Are you seeing it? ये देख रहे हो. और इसी के बगल में नंदा देवी peak. So नंदा देवी national park is also there, and नंदा देवी is actually a mountain peak. है ना, नंदा देवी का आपने नाम सुना होगा, तो वहीं पर वो mountain peak है, उसी के जस्ट बगल में. देखो these are some of the very famous religious places. Let me write it with green pen. Yeah, let me write it with, let's say, red pen. तो देखो ये हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना. So these are religious places, Hindu religious places. In fact, जोशीमठ also. तो ये सब काफी religious places है यहाँ का. अब देखो आपको शायद पता होगा, यहाँ पर से कहीं पर से भागीरथी आती, somewhere I am making a rough sketch, और यहाँ पर से इस तरह से अलकनंदा आती. तो यहाँ पर पास में ना you will find अलकनंदा river near जोशीमठ, यहाँ से जा रही होगी, यहाँ से कहीं somewhere here भागीरथी आती है, वहीं पे कहीं मिलती है, फिर ये गंगा बन जाती है, right? So here you will find अलकनंदा river also going nearby it, ठीक है, जोशीमठ टाउन के पास. अब देखो let me zoom it. देखो this is जोशीमठ टाउन, यहाँ पे से एक रिवर जा रही है, are you seeing it? तो यही है अलकनंदा रिवर. तो अलकनंदा एंड भागीरथी meets to form गंगा. ये आप जानते होंगे, अलकनंदा भागीरथी मिल करके गंगा बनती है ना. तो लेफ्ट साइड वाली भागीरथी इस तरह कुछ आती है ना. सो अलकनंदा एंड भागीरथी मीट्स इन देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा, ठीक है. सो राइट साइड वाला जो अलकनंदा. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस. हाँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जोशीमठ है, एंड दिस इज तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. तो रेसिडेंट्स यानी वहां के लोग ये कह रहे हैं, सो पीपल लिविंग इन दैट एरिया सेइंग कि दे आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. क्योंकि अगर पहाड़ी एरिया में कोई भी वेट वाला चीज बनाया, सो इफ यू मेक एनी डैम और एनी हैवी प्रोजेक्ट, द टेक्टोनिक प्लेट्स माइट गेट डिस्टर्ब्ड, है ना. सो डैम्स और एनी अदर बिग प्रोजेक्ट्स कैन affect टेक्टोनिक मूवमेंट्स, है ना. जैसे आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. देखो यहाँ पे ना, अब मैं और जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है ना. तो ये तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट है, ये अलकनंदा रिवर जा रही है, और कहीं यहाँ पे कहीं पे आपको यहीं पे, आई मीन समवेयर हियर यू विल फाइंड जोशीमठ, ठीक है, ठीक है. सो यू मस्ट हैव हर्ड, जैसे इंडिया में एक बार 1967 में कोयना में अर्थक्वेक आया था. कोयना इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ डैम. तो डैम में बहुत ज्यादा पानी एक जगह जमा था, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया. अब समझो. So any big project or construction done at a very you can say fragile ecosystem can cause you can say you can say tectonic movements or even earthquake and all. तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पहाड़ी एरिया में शायद उतना सही नहीं, जैसा कि वहां के लोग कह रहे हैं. So you can see it here. This is what the people they have said there,
कि it is NTPC's Tapovan Vishnugad power project which is perhaps responsible for this. Okay, हाँ, कोयना डैम 1961 महाराष्ट्र, yes, जोया खान, right. Now अब देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करें जोशी मठ की, तो ये जो पूरा रीजन, इस जिला को, दिस डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज चमोली डिस्ट्रिक्ट, राइट. ये जो है जोशी मठ का पूरा एरिया, इसको हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं. एंड दिस डिस्ट्रिक्ट हैज विटनेस्ड एक्चुअली एवलांच इन द पास्ट एज वेल. तो पहले भी इस जिला ने एवलांच देखा है, तो मैं दिखाता हूं. दिस इज फरवरी 2021 न्यूज, ऑलमोस्ट 2 years बैक, 2 साल पहले की लगभग बात है. उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट हैपेंड, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था. एंड अगर आप उसको पढ़ोगे, इफ यू गो डाउन एंड रीड, यू विल गेट टू नो अगेन अबाउट द सेम. लिखा है 2 power projects, Rishi Ganga Hydel project and NTPC Tapovan Vishnugad Hydel projects were extensively damaged and all. तो उसी रीजन में ये आया था, क्या कहते हैं, है ना. देखो, नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ, नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया था, है ना. तो यहीं पे नंदा देवी ग्लेशियर भी है. तो if you see carefully, नंदा देवी, है ना, यहाँ पे जोशीमठ है. So in the same region actually, this avalanche had happened 2 years back. तो avalanche 2 साल पहले उसी रीजन में आ चुका है पहले भी. ठीक है. So just have an idea about this also. ठीक है. तो वहां पे देखो अलकनंदा रिवर्स वहां से गुजरती है and all. So just have an idea. Is it clear guys? है ना. तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहीं पे चमोली डिस्ट्रिक्ट ही पड़ेगा. ठीक है. Is it clear? Am I able to explain it clearly? I hope. Yes. Okay. Now let's move on to the next one. PMO review situation sinking Joshimath town. मैंने बता दिया. अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि residents of Joshimath in Himalayan region, pilgrim town that appears to be sinking are blaming major power and road infrastructure project for this. तो वो कह रहे हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट है विष्णुगढ़ का, वो मेन रिस्पॉन्सिबल है. तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी हैज कॉज्ड इररिवर्सिबल डैमेज. तो उसने जो डैमेज किया है वो इररिवर्सिबल है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है. ओके, यस. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. Okay, now before moving on guys, there's a question for you. Please answer this question. Who among the following is the chairman of Tata Group and Air India Group? Your options are Ratan Tata, Noel Tata, Cyrus Mistry, Natarajan Chandrasekharan. What is the right answer to this question? आपको ये बताना है कि टाटा ग्रुप और एयर इंडिया ग्रुप के चेयरमैन कौन है. So last year Tata Group actually bought Air India at 18,000 crore rupees. आपको पता होगा पिछले साल 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ने गवर्नमेंट से खरीद लिया था. So the chairman of Tata Group automatically actually he became the chairman of Air India Group as well. So who is the chairman? Yes, Saujanya Sakar, right, very good. The right answer is D. N. Chandrasekharan is the right answer to this question. There is a request, everyone, please press the like button, subscribe to our channel. सबको like button press कर दो. We are seeing 9 likes, 12 is watching. So सबको like button press कर दो. Everyone, yes. Okay, so he is actually the chairman of Tata Group as well as Air India Group. Now he said we fell short, says Tata's son's chairman on Air India flight route. See, what happened was an Air India flight was actually coming from New York from on November 26 last year. So it was coming from USA to India, right? And a person actually, the accused name is Mr. Shankar Mishra. He actually he urinated in actually on a woman, and because of which it became a very serious issue and all. तो क्या हुआ था कि 26 नवंबर की बात है, प्लेन जो है एयर इंडिया के प्लेन वो अमेरिका से आ रही थी, और उसी में इनका नाम जिन पर एक्यूजेशन है उन्होंने पेशाब कर दिया था शंकर मिश्रा साहब ने किसी औरत पर. तो उस पर काफी इट बिकेम अ वेरी बिग न्यूज एंड ऑल, बट वो काफी दिन बाद न्यूज में आया. So he says कि we should have handled it more carefully, और बहुत और उससे बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा सकता था. In fact, the accused has been he was working in US company, US firm, and he was removed or fired from that firm. तो उनसे वहां से उनको उस कंपनी से उनको निकाल भी दिया गया. So that is why it was in the news. Okay, is it clear? हाँ, Cyrus Mistry died recently, हाँ, in a car crash. Now the next one is the fake Indian COVID vaccines flooding China's black market. देखो ये कोर्ट में लिखा हुआ है, तो जब भी कोर्ट में लिखा रहा है इसका मतलब है किसी का एलिगेशन वगैरह होगा, मतलब it might not be fake. So this is according to the Chinese health experts that fake version of Indian generic medicines are flooding as black market in China.
flooding the black market in China as a record surge of COVID-19 fuels demanding antivirals, etc. and all. So when COVID actually was in the rise, or actually is in the rise in China, they need a lot of medicines, and according to the Chinese health experts, many fake Indian medicines are actually flooding the Chinese market. तो चाइनीज हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से, जैसा कि उन लोगों ने बोला कि बहुत सारे इंडिया की फेक मेडिसिन वहां आ गई, ये उनका कहना है, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. With a Paxlovid in short supply, this is a medicine, okay, used in COVID and all. And highly regulated in government clinics, sales of Indian generic versions have been ballooned through Chinese e-commerce platform, etc. and all. So just have an idea about this. Okay. है ना. So इसी के बारे में, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं जानना है, but just have an idea since they have discussed it. So just have an idea about it. Okay. Yes. Now. Okay. Before moving on, guys, there's a small announcement. Those who are attempting CLAT 2024, which is going to happen this year in December, इस साल दिसंबर में CLAT एग्जाम होने जा रहा है. So if you want to secure your seat in Dream NLU, you should go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus marks. Monthly e-magazines will be provided. So if you have any query, you can call on this number 9538895678. इस नंबर पर आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है. So hurry up before it is too late. है ना, कहा जाता है earlier you start, the better is for you. है ना, तो जितना पहले तैयारी शुरू कर दोगे उतना अच्छा है आपके लिए. Okay, yes. Now the next one, yes. So she got all India rank 18 in AILET 2023. So next year we will be showing your photo also. So you should join the batch and get a very good rank. है ना? Yes. We are working hard to ensure that we'll be having single digit rank from our classes. Okay. So let's talk about editorials. So हम लोग editorial की तरफ चलते हैं. So these are the two main editorials and these are the side editorials. ये जो होते हैं वो authorless होते हैं. So these actually represent the opinion of the Hindu newspapers and all. Okay, so yes, these are the two ones. Avoid further delay in conducting census or timely halt. So these are the two important articles. ठीक है. Now first let's discuss about this. देखो census क्या होता है? Can anyone write in the live chat what is census? कोई बता सकता है? देखो census is actually the survey which is done at all India level. है ना? India level survey done, which actually it is done to find out the entire things about the entire demography of India. Demography of India के बारे में. For example, what is the population? Okay. Then what is the gender ratio, sex ratio? Okay. ठीक है. और बहुत सारी चीजें. ठीक है. So and all. Then कि कितने percent. So religion wise also कि how much percentage of Hindus are there, Muslims are there, Christians are there, Sikh are there. है ना? How much population is there, how much female is there, how much literacy is there, how much literacy in male is there, how much literacy in female is there, है ना, कितना male में literacy है, female में literacy है. So these all are actually considered as census and generally it is done after every 10 years. Yes, first synchronous census was done in 1881. Zoya Khan, right, very good. हाँ हर्षिता ऋषिता चौधरी, right, जनरली हर 10 साल पे होता है. तो वही ये बता रहे हैं कि when I was a child in 1961, I was in primary school and a teacher came and they did the census duty and I was waiting for the next year also. Then I got to know that it is done every 10 years and all. तो मेरे यहाँ टीचर आए थे, उन्होंने सेंसस किया था, तो हमको लगा अब नेक्स्ट ईयर भी आएंगे. फिर हमको पता चला कि नहीं, ये तो 10 साल पे एक बार होता है. ठीक है. Recently, this newspaper reported that freezing of administrative boundaries that precedes census would be done with effect from 1st July 2023 and all. है ना. तो इस न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया जाएगा सेंसस के हिसाब से 1 जुलाई 2023 को डेट रख करके एंड ऑल. व्हेन रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड टू कंटेन पैंडेमिक इन मार्च, सेवरल स्टेट्स एंड कंट्री वेयर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ स्टार्टिंग एट ऑल. हाँ देखो होता क्या. सो द सेंसस हैपेंड इन 2001, देन इट हैपेंड इन 2011, देन इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन 2021. है ना, मतलब 2020 से ही शुरू हो जाता है. सो इट वाज सपोज्ड टू हैपन, बट टिल नाउ वी आर इन 2023 एंड एवरीथिंग इज नॉट स्टिल. Actually the census is not done. Now the reason is, I hope you are aware, COVID-19 happened 2020 से लेके 2 साल तो we are disturbed with COVID and all. ठीक है. तो वही वो बता रहे हैं कि many states were actually in March 2020 planning to come up with house listing operations.
But yes, I hope you remember the COVID and all happened. 2 years we have lost in this. तो 2 साल हम लोग का नुकसान हो गया है कोविड वगैरह में. Constitution talks about the use of census data for delimitation of constituencies and all, for determining the quantum reservation of SC/STs and all. ठीक है. तो होता क्या है कि I hope you are aware. देखो, reservation of SC/STs are given in, let's say, लोक सभा, है ना. Similarly, or actually, तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, है ना? How the reservation is done? Of course, it is done on the basis of census. सेंसस के हिसाब से कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंटेज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, देन इन दैट एरिया दैट सीट वुड बी रिजर्व फॉर you can say SC/ST and all, right? Now he's saying, however, it does not say what should be the periodicity of the census. Even in Census Act 1948, which predates the Constitution, nothing is talking about periodicity. तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है, neither it is mentioned in Constitution nor in Census Act that it should be done in 10 years. ऐसा कहीं मेंशन नहीं है संविधान में या सेंसस एक्ट में कि हर 10 साल पे होना चाहिए. मतलब पीरियोडिसिटी नहीं मेंशन है कि कितना साल पे होना चाहिए. बट यस, इफ वी सी फ्रॉम सिंस 1881 टिल नाउ, इट हैज बीन हैपनिंग एट द गैप ऑफ एवरी 10 years. ठीक है, अगर हम लोग 1881 से अभी तक देखेंगे तो 10 साल की गैप पर ही हमेशा एक्चुअली होता आ रहा है. ये हमारा देखा गया है ना. Yes, conducted by Registrar General and Census Commissioner under Ministry of Home Affairs. Right, short special, right. हाँ, तो याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, तो होम मिनिस्ट्री कराती है. ठीक है, just have an idea about it. Okay, yes. Okay, now the census alone can provide population data for every village and town in the country. Sample surveys can provide reliable data on social and demographic only at higher geographical levels and all. तो ये बता रहे हैं कि सेंसस जो है पॉपुलेशन का डेटा आपको प्रोवाइड करता है विलेज और रूरल एरियाज का, है ना. वी हैव पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल की कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा एटसेट्रा एंड ऑल. ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि इट इज यूज द सेंसस डेटा इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस, है ना, in SC/ST की which constituency should be reserved in state level at and parliamentary level for parliamentary elections, that okay, this much population is there of SC, this much population is there of ST. So accordingly actually the reservation is provided for elections. We are talking about elections reservation, exam entrance वाला नहीं reservation. We are talking about reservation in elections, in Lok Sabha and state legislature, MLA MP का elections. ठीक है, yes, so just have an idea about it. एक question है, ठीक है, क्वेश्चन इज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ग्रेट डिवाइडिंग ईयर. किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? व्हिच ऑफ देम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसको कहते हैं? इट इज रिलेटेड विद सेंसस, पॉपुलेशन एंड ऑल. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. प्लीज गो फाइंड आउट एंड रीड अबाउट इट. ठीक है, इस सेंसस में ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन से साल को कहते हैं. ठीक है, ओके, यस, एंड एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. Now you can see Article 82 of Constitution talks about readjustment after each census, the allocation of seats in House of the People. House of the People मतलब लोक सभा. ठीक है, ओके, तो ये बता रहे हैं readjustment of census. ठीक है, हाँ, very good. Zoya Khan, right? 1921 is actually called as Great Dividing Year, and there's a homework. Go and find out why it is called as Great Dividing Year. 1921 को Great Dividing Year क्यों कहते हैं? Okay, yes. Now, so this is about it. Even it is mentioned in Constitution that you have to readjust or change the boundary of constituency. Change the boundary of constituency. Boundary of constituency after every census, है ना. तो constituency जो है जहां पर इलेक्शन लड़ा जाता है कि ये वाले एरिया में एक एमएलए का एरिया, ये एक एमपी का एरिया है, उसके बाउंड्रीज को चेंज करना होता है सेंसस के हिसाब से, ताकि पॉपुलेशन हर जगह इक्वल रहे हर कंस्टिट्यूएंसी में. So that to ensure कि population in every constituency should be same. Okay, yes, just have an idea about it. Now the author is saying the rural-urban distribution of population has been rapidly changing over the years. Yes, आपने देखा होगा. So rural-urban ratio में, so we are witnessing the rise in urban area population and slightly decrease in rural area population. So right now I think 30.16 है ना, 31-30 के आसपास है. I think 31% is India's urban population and 69% is rural population. इतना था 2011 सेंसस के हिसाब से. So most likely it will increase. शायद वो 35% या 40% चला गया, 35 वगैरह. So the urbanization is increasing. More number of people are moving from rural to urban areas, है ना. तो सेंसस में ये भी पता चलेगा इस बार कि कितनी और ज्यादा लोग शहर में बसे हैं
और गांव से कितने लोग छोड़ के गए. So we will get to know how many new urban population we have seen in the last 10 years, 12 years. ठीक है, is it clear? Yes. Now the author is saying the pandemic resulted in deaths among adults and the aged relatively more than children. Its impact on age distribution is severely affected. हाँ, तो ये बता रहे हैं कि चिल्ड्रन से ज्यादा एजेड लोग को ज्यादा डेथ हुआ है नॉन. ठीक है, उससे जो डेमोग्राफिक पैटर्न इंडिया का वो चेंज हो गया होगा. यूथ पॉपुलेशन कितना है, एजेड पॉपुलेशन कितना है, चाइल्ड पॉपुलेशन कितना है. इसीलिए अगर नया सेंसस होगा तो हम लोग को पूरा एक नया आइडिया लगेगा, राइट. So after the new census is done, we will get to know more about the youth population, the aged population, the child population and all in a more effective way, right? So that is what the author is talking about. Now, the next one is a timely halt. Supreme Court must lay down rehabilitation norms for eviction from public spaces. So the author of the Hindu editors have written this, कि whenever a rehabilitation happens, so this is talking about Haldwani case, okay? So Supreme Court should lay down the guidelines that, okay, if the houses are illegal and if you are ordering demolition, then they have to be, there should be some time should be given so that rehabilitation can be done. So all the entire guidelines needs to be laid down. ठीक है, तो सारा guidelines lay down किया जाना चाहिए कि कैसे जो है rehabilitation एक जगह से दूसरी जगह मतलब घर demolish करने से पहले उन लोगों को मौका दिया जाए and all. So that is what is being discussed. Supreme Court's timely intervention has halted eviction of 50,000 people from Haldwani in Uttarakhand and all. So I hope you are aware of it. We have already discussed in the past as well. देखो, this is जोशीमठ, ये काफी न्यूज में था. We have just told you. And here is Haldwani. ये वाला देख रहे हो, this one. So actually what happened was कि in Haldwani there is a piece of land where actually the railway claimed that the land belonged to them, and there I think there are 4,000 families are living. There are 3 schools as well, है ना, 3 school है, सरकारी school, 1 primary health center है, and all according to the Indian Express article. So the railway claimed that this is their land and they won the case in the Uttarakhand High Court. So Uttarakhand High Court said to demolish all the houses and give it to the railways. But Supreme Court recently stayed the order. In 7 days, 50,000 people cannot be uprooted. तो 50,000 लोगों को 7 दिन के अंदर नहीं हटाया जा सकता है इतना जल्दी. So the Supreme Court stayed the order of Uttarakhand High Court. Okay. Now the proceeding will happen in Supreme Court and let's see क्या होता है. Okay. So just have an idea about it. Okay. Now it says that Uttarakhand High Court had taken a tough stand against the resident and passed a slew of direction and would have entailed their eviction in a week backed by force and all. So Uttarakhand High Court said कि एक हफ्ता के अंदर सारे लोगों को हटा देना है. So it's almost I think 40-50,000 people. There are a lot of 3 schools are there, 4,000 families and all would be there. So the Supreme Court said that there should be a human angle also, and that is why the Supreme Court stayed the Uttarakhand High Court order that yes, in this severe cold, itna thand mein, especially in Uttarakhand areas, there is a lot of cold because of Himalayan region and all. We cannot actually tell the people that in 7 days the 50,000 people should leave. तो 50,000 लोगों को 7 दिन के अंदर नहीं हटाया जा सकता है. So that is why it stayed the order. Okay, so that is why it was in the news. Just have an idea about it. Okay. Now, second half, if you see the second half of editorial, these are the 2 articles imagining the politics of fraternity. So this is related with Bharat Jodo Yatra. ठीक है, Bharat Jodo Yatra. Okay. So although it is a slightly political one, but still some basic idea you should have about Bharat Jodo Yatra because it has been in the news in the last 5-6 months. तो एक छोटा सा basic idea होना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा से related. So I will be discussing little bit about it. फिर एक ये है, this is related with जल्लीकट्टू. इस पे मैंने कई सारा डिस्कशन कराया भी है, but I will be discussing it again little bit. थोड़ा सा और भी डिस्कस कराऊंगा. Okay, yes. Now imagining the politics of fraternity. So he is actually saying Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra is right now passing through Haryana, and in the next 10 days it will reach Srinagar. तो अभी हरियाणा से जा रही है, श्रीनगर अगले 10 दिन में पहुंच जाएगी. And this is actually he is invoking the idea of fraternity or बंधुत्व. बंधुत्व means fraternity, brotherhood and all. देखो यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा actually starts from here कन्याकुमारी in Tamil Nadu. It goes like this and all and it goes to Srinagar. ठीक है. So right now it is in Haryana somewhere. तो ये है ना somewhere here is Haryana. So right now Rahul Gandhi's yatra actually started few months back from Kanyakumari. He started walking. पैदल चल चल के यहाँ तक पहुंच गए.
and now he is going to suppose in the next 10 days he will reach Srinagar. तो अगले 10 दिन में वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे. Okay, from Haryana. So this is actually Rahul Gandhi walking by feet and all. I hope you are aware of it. Okay. So the author is actually talking about since the emergence of modern nation states, the value of liberty, equality and fraternity have been the touchstone of all democratic projects across the world. तो ये बता रहे हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स का टचस्टोन रहा है. So now I have a question for you. If you read the preamble, you will see these words liberty, equality and fraternity, जो कि उन्होंने यहाँ मेंशन किया. देखो लिखा ना कि preamble and all. Even the preamble of Indian Constitution talks about it, है ना. तो ये कहां से लिया गया है? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और चाइनीज रेवोल्यूशन. यस, हाँ, स्टार्ट ऑन 7 सितंबर. सो प्लीज टेल मी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, दीज आर द की वर्ड्स मेंशन इन प्रीएम्बल. प्रीएम्बल के, संविधान के प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वर्ड मेंशन है. ये कहां से लिया गया है? यस, very good, I have got the right answer. Rishita Chaudhary is right. French Revolution of 1789 actually gave the concept of liberty, equality and fraternity. हाँ, कृतिका मिश्रा, you are also right. Very good. तो अगर आप पढ़ोगे, if you read preamble, you will get to know here. देखो ना, liberty, equality, fraternity. So these are the words taken from French Revolution, and you will find it in French in preamble as well. Yes, Ahana Datta, Zoya Khan, you all are right. So that is what देखो he is referring to French Revolution and all. ठीक है, brotherhood, fraternity, that is what he is defining in Hindi as बंधुत्व. ठीक है, fraternity को define करेंगे नहीं, brother and all. So he is now quoting Bhimrao Ambedkar as well, है ना, of the idea of fellow human beings and all, brotherhood. So that is what is being discussed. इसको आप पढ़ लेना. So it's slightly political, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा का. मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चन, सो जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, देखो मैंने बताया ये वाला जो है द साइड आर्टिकल एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जल्लीकट्टू, और इस पर आई थिंक 3-4 days बैक वी हैड डिस्कस्ड एन एडिटोरियल एज वेल. सो कम पोंगल एंड मेनी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु आर अलाइव विद प्रिपरेशन फॉर जल्लीकट्टू. ऑन December 8 a 5-judge bench reserved its verdict, and they will be passing a judgment soon. तो देखो, I hope you are aware, this is Jallikattu. So people from South India, especially Tamil Nadu, are aware of this. This is a sort of very similar to bull fighting which happens in Spain. उसी तरह का होता है. Even I don't have much idea about it, how it is played, but it is similar to that. Some bull fighting happens and all. So now, why there's a petition there in Supreme Court and all? देखो, those who are supporter, they are saying this is my cultural right. So I have a right to protect my cultural right under Article 29, है ना. So Article 29 talks about protection of cultural right, है ना. आप अपना cultural right को protect कर सकते हो. It's your fundamental right mentioned in Article 29. But those who are opposing it, they are saying this is cruelty to animals. जो अपोज कर रहे हैं जल्लीकट्टू को, they are saying this is cruelty to animals and this is violative of Prevention of Cruelty to Animals Act. There is a law also for that, कि ये एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी है और इसीलिए इसको बैन किया जाना चाहिए. सो लेट्स सी, द सुप्रीम कोर्ट विल बी पासिंग ए जजमेंट वेरी सून. तो जजमेंट आने वाला है, तो हम लोग कुछ दिन वेट कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्या है. सो बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज जल्लीकट्टू. तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जल्लीकट्टू क्या है, क्यों केस गया है सुप्रीम कोर्ट में एंड ऑल. और हम लोग इंतजार करेंगे विद इन अ फ्यू वीक्स यू विल गेट द जजमेंट. तो जल्दी आपको मिल जाएगा. इट्स जनरली सेलिब्रेटेड इन पोंगल फेस्टिवल एंड ऑल. तो एक आइडिया होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. इसी को उन्होंने डिस्कस किया. लिखा ना आर्टिकल 29, whether proposed cruelty to animals and all. So Article 29, I have told you, protection of your cultural rights versus animals cruelty. So this is the debate. Main debate is this. Okay. Okay. Yes. Okay. Before moving on, guys, there's a small announcement. And on 15th January, 15 January, after 6 days at 7 p.m, we will be having a free workshop, Key Learnings from the CLAT 2023 with Nivedita ma'am. ठीक है. सो रजिस्टर नाउ. हाउ टू रजिस्टर? गो टू बायजूस एग्जाम प्रेप. ठीक है. डाउनलोड द ऐप एंड यू विल गेट द चांस टू रजिस्टर देयर. तो वहां जाओ, उसको डाउनलोड करो. गो टू ऐप एंड गो टू क्लैट एंड लॉ सेक्शन. जब आप डाउनलोड करोगे,
go to CLAT and law section and there's a button for register, so register it there. ठीक है, so 15 जनवरी को 7 बजे. So just remember it, it's important and it will be beneficial for those attempting the next year CLAT. ठीक है. Now एक पेज नंबर 10 में था सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन इलाहाबाद हाई कोर्ट इन यूपी लोकल बॉडी इलेक्शन एंड डेविएशन फ्रॉम इट्स अर्लियर जजमेंट. नाउ देखो, we had discussed few days back that Allahabad High Court passed an order actually not allowing OBC reservation, you can say, in local body polls. Local body polls means so the elections of third tier of government. So third tier of government like ward councillor, ward commissioner, mayor, panchayat, mukhya, these are called as local body elections, है ना. तो जो नीचे लेवल पे तीसरा लेवल का इलेक्शन होता है थर्ड टियर गवर्नमेंट का लोकल बॉडी में, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन को क्वैश कर दिया था कि नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन यूपी में नहीं दिया जाएगा. बट व्हेन इट वाज फाइल्ड पेटिशन, अपील वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट स्टेड द ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया. सो दैट इज व्हाट इट सेज. लेकिन आर्टिकल में लिखा है इट्स अ डेविएशन फ्रॉम अर्लियर जजमेंट. तो जो अर्लियर जजमेंट आया था वो ऑपोजिट ओपिनियन दिया था. सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था. जज, former judge, a retired judge at that time, who was a judge of Supreme Court, he held that until triple tests were completed, no reservation for backward class could be provided. So जो actually क्या होता है, it is said actually कि the judgments depend very much upon the opinion of judges as well. ठीक है, तो पहले जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ और फैसला दिया था सिमिलर टाइप ऑफ जजमेंट्स में, मध्य प्रदेश से रिलेटेड मामला था, जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया. Yes, so that is what you are supposed to understand. Yes, the judgments may differ and it actually varies from judges to judges as well. ठीक है ना. So जिसको हम लोग judges discretion कहते हैं, varies, है ना. So different judges can have different opinions in this. तो यही था एक. Now I hope you remember last year in December elections happened in two places, in Himachal Pradesh and Gujarat. So the Gujarat chief minister was Mr. Bhupendra Patel. He was the chief minister. And he was, he again actually has been re-elected. तो वो चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र पटेल और वो दोबारा सीएम रहेंगे. Now in Himachal, the earlier government was BJP and it lost the election and Congress came to power. And that is why the new chief minister is Mr. Sukhvinder Singh Sukhu. So he is actually Mr. Sukhvinder Singh Sukhu is the new chief minister of Himachal. So just have an idea कि नए सीएम है हिमाचल प्रदेश के. Okay? Yes. Okay, yes. Now the next is एक और आर्टिकल पेज नंबर 12 में, despite Supreme Court order, single woman denied abortion. Now I hope you are aware of this. Last year in 29th September, Supreme Court allowed abortion rights even for single women as well. So if the lady is unmarried, still she can get abortion and all. She has the right to abortion. अगर lady married नहीं है तो भी वो abortion rights उनको मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कहा था. Okay, but today there was an article. ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन तो भी जो है डॉक्टर्स ने किसी एक खास जगह मना कर दिया अबॉर्शन करने से. So that is what the article is. Go and read about it, है ना, कि क्यों मना किया क्या था and all. ठीक है. So just have an idea. So this is a very famous judgment of Supreme Court. इसको आप पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना. Bench says prohibiting single women with pregnancy up to 24 weeks from accessing abortion while allowing married women is amounts to discrimination. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मैरिड वुमेन को आप अलाउ करते हैं 24 वीक तक और अनमैरिड को नहीं अलाउ करें तो डिस्क्रिमिनेशन है. सो इट सेड कि इट शुड बी ओपन टू बोथ मैरिड एज वेल एज अनमैरिड वुमेन. ओके, यस, दैट वाज इट. देन वर्ल्ड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. चाइना ओपन्स बॉर्डर आफ्टर 3 years, thousands रिटर्न होम. तो चाइना ने बॉर्डर ओपन किया 3 साल बाद. ओके, सो मेनी पीपल आर एक्चुअली रिटर्निंग बैक होम, जो कि बाहर रह गए होंगे या फंस गए होंगे या किसी भी कारण से नहीं जा सके होंगे, है ना. So just have an idea about it. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Everyone please press the like button, share this video and subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.